Hello everyone, welcome to the next lecture of capital gain. Now this is the second lecture of capital gain. In the last lecture I have told you about first one, conditions of capital gain given under section 45(1). So there are two conditions. There must be capital asset and there must be transfer of such capital asset during the previous year. Then next we have discussed the meaning of capital asset. So meaning of capital asset is very simple. What is the meaning of capital asset? Capital asset means any kind of asset, whether movable, immovable, tangible, intangible, except Mrs. GS. So in meaning of capital asset, you have to mainly focus on the exceptions of capital asset, because meaning is very simple. Capital asset means any kind of asset except Mrs. GS. Then in Mrs. GS, M was movable personal assets of the assessee used by him or his family members. So I have told you to write note number 1 to 5 for explaining that point. What is movable personal assets? Because movable personal assets are excluded from the definition of capital asset. It means there will be no capital gain if you transfer your movable personal assets like TV, fridge, your personal car, furniture, fan, whatever household things are there in your house. If you transfer it, there will be no capital gain because they are your personal assets and they are movable. Now, which assets are not considered as personal movable asset, even though they are personal movable asset? So for that, just take out your notes. Important points. See the important points below the definition of capital asset. There are few important points are given which are already mentioned. You don't have to write, it is already printed in the notes. So first important point is assets used for personal purpose but still taxable under capital gain are jewelry, drawings, paintings, sculptures, archaeological collection, or any work of art. So these things, even though they are personal, even though they are movable, still there will be capital gain if you transfer such assets. Okay, so these are the exceptions of movable personal asset. In short, on these assets there will be capital gain even though they are movable and personal. Okay, so important point number 1, you can write exception of movable personal asset and taxable. So point number 1, jewelry, drawing, painting, sculptures, archaeological collection, or any work of art. They can be movable, personal, but they are taxable. Still they are taxable. Okay, so this is very important for MCQ purpose, because these things, especially jewelry, everyone I think in India keeps some jewelry at home. They use the jewelry for their own purpose, personal purpose. So they can say, if I transfer the jewelry to someone, it is my personal, it is my movable asset, so there will be no capital gain. But you have to remember this exception, that even though jewelry is movable, even though it is personal, if you transfer it and you get gain, that gain would be taxable. Okay, so jewelry, drawing, painting, sculptures, archaeological collection. Archaeological collection means many people has habit to collect the old things, ancient coins, etc. So those things are also taxable if you transfer it later on and get a capital gain. Okay, so point number 1 is very important. Jewelry, drawing, painting, archaeological collection, all these things or any work of art are taxable even though they are personal, even though they are movable. Okay, now point number 2, gold utensils, silver bars, silver coins were held not to be considered as personal effect.
hence capital gain is applicable. So this is also exception of movable personal asset. So if you keep gold utensils, सोने के बर्तन, बहुत लोगों की हैबिट होती है सोने के बर्तन घर पे रखने के लिए यूटेंसिल्स, और उसमें खाना भी खाते हैं. सो गोल्ड यूटेंसिल्स अगर आपके पास है, ठीक है, आप तो खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, बहुत शौकीन है, उसमें खाना भी खाते होंगे, बट आगे फ्यूचर में जाके आपने उसको ट्रांसफ़र किया, उस पर गेन हुआ, तो वो गेन भी क्या होगा, टैक्सेबल, इवन दो योर गोल्ड यूटेंसिल्स आर पर्सनल एंड मूवेबल. ओके. Similarly, silver bars, silver coins were held not to be personal effect, hence capital gain is applicable. So gold utensils, silver bars and silver coins are in short taxable, even though they are movable personal, or they can be movable or personal. Point number 3, silver utensils held to be personal assets, hence no capital gain. So in point number 2 we learned that gold utensils are taxable. In point number 3 it is mentioned that silver utensils are not taxable. So आप चांदी के बर्तन में खाना खा सकते हो, ठीक है, वो अपने घर पे आप रख सकते हैं. फ्यूचर में अगर आप उनको सेल करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, उसमें जो गेन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा. ओके. सो इफ़ इट इज़ सिल्वर यूटेंसिल, it is non-taxable because it will be considered as your movable personal asset. But if it is gold utensil, it will be taxable. Okay, so keep this in mind. Then point number 4, car used in business is also treated as capital asset. So I have told you in the last lecture that if you have a car for personal purpose, it will be treated as movable personal asset and no capital gain will be charged. But if you are using that car for business purpose also, then it will be taxable under income from business also and some part in capital gain also. So this point number 4 we will discuss in detail in which chapter? Income from business chapter. So after point number 4 you can write income from business topic. Then in point number 5, jewelry meaning is explained. What is jewelry? Because jewelry is taxable. In point, as per point number 1, jewelry is taxable even though it is movable, even though it is personal. तो आपके घर में आप जो आपकी पर्सनल ज्वेलरी जो आप पहनते हैं या आपने लॉकर में रखा हुआ है, बैंक के लॉकर में रखा हुआ है या घर के लॉकर में रखा हुआ है, वो सारी की सारी ज्वेलरी क्या है, टैक्सेबल है इफ़ यू ट्रांसफर इट लेटर ऑन एंड गेट अ गेन. So that gain would be taxable under the head capital gain. Okay. So jewelry means ornaments made up of gold, silver, platinum or any other precious metal or any alloy containing such metals, and precious stones whether or not set in any furniture, utensils or other articles. So jewelry means anything made up of gold, silver, platinum, any precious metal. Precious metal means you can say diamond, etc., or any alloy containing such metal. And B, precious stones whether or not set in any furniture, utensil or any other article. So precious stone, बहुत सारे लोग प्रेशियस स्टोन पहनते हैं, स्पेशली रिंग पहनते हैं स्टोन की. बहुत सारे बाबा बोलते हैं कि भाई ये रिंग पहनो आपके लिए लकी होगा. सो वो बहुत सारे लोग हैं जो प्रेशियस स्टोन्स की रिंग भी पहनते हैं. बहुत लोग फर्नीचर में यूज़ करते हैं और कोई एसेट में यूज़ करते हैं. काफ़ी लोग मोबाइल में प्रेशियस स्टोन यूज़ करते हैं, यू नो, उसके कवर में. तो ये सारे चीज़ें भी आपने अगर यूज़ किया है तो वो भी ज्वेलरी कंसिडर होगा. ठीक है, अगर आपने कहीं प्रेशियस स्टोन कोई भी असेट में यूज़ किया है तो वो भी ज्वेलरी कंसिडर होगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा फ्यूचर में अगर आप उसका ट्रांसफ़र करते हैं. तो क्लियरली लिखा हुआ है प्रेशियस स्टोन्स वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और एनी अदर आर्टिकल. सो मैं अगर मेरे मोबाइल के फ़ोन कवर में कोई प्रेशियस स्टोन मैं लगा के रख देता हूँ दिखाने के लिए, और कल को अगर फ़ोन में सेल करता हूँ विद दैट प्रेशियस स्टोन, so that will be, there will be capital gain. Okay, it will be chargeable to capital gain. तो वही चीज़ है, प्रेशियस स्टोन
आप कहीं भी असेट में यूज़ करेंगे, वो असेट को भी सेल करोगे तो भी आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। बिकॉज मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में, सॉरी, जो मूवेबल पर्सनल एसेट की मीनिंग में बताया था कि आप फर्नीचर है या फ़ोन है, अगर आप उसको सेल करोगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं चार्ज होगा, बिकॉज दे आर मूवेबल पर्सनल एसेट, करेक्ट। बट इफ़ यू include any precious stone in that personal movable asset and then you transfer it, then it will be taxable. Okay, so that is the difference. So these points from 1 to 5 are related to the M, that is movable personal assets. Then point number 6 is related to R, that is rural agriculture land in India. So rural agriculture land in India is exempt, means it is not considered in the definition of capital asset. So if you transfer the rural agriculture land in India, there will be no capital gain. So we have to learn the meaning of rural agriculture land. Okay, so it's very simple. It should be used for agriculture purpose first of all, and that agricultural land should be located in the rural area. So main point is definition of rural area and urban area. If you buy any agricultural land in a rural area and then you transfer it, then you get the exemption. So main point here is what is rural area, what is urban area. Okay, so point number 6, in this point meaning of urban area is given. Okay, but we want meaning of rural area. So whatever is not in urban area will be considered in rural area. Okay, that's why we are learning the meaning of urban area, because learning the meaning of urban area is very simple. So आप बोलोगे सर हमने पॉइंट में तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड लिखा है और हमको मीनिंग बता रहे हो अर्बन एग्रीकल्चर, अर्बन एरिया की। सो इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज वॉट एवर इज नॉट इन अर्बन एरिया विल बी कंसिडर्ड इन रूरल एरिया. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया. So urban area meaning A, any area that is municipality, cantonment board, etc., which has a population of 10,000 or more, or shortest distance from the area is up to 2 kilometers and having population of more than 10,000 up to 1 lakh. Then distance up to 6 kilometers with population of more than 1 lakh up to 10 lakhs. Then distance from that area up to 8 kilometers with population of more than 10 lakhs. And below that table it's given that rural area means area which is not urban area. Okay, now first of all you have to understand the meaning of urban area, because whatever I have read I am sure आपको कुछ समझा नहीं होगा. So we are learning the meaning of urban area. Okay, now read it carefully what is given in the notes. Any area, municipality, cantonment board, panchayat, whatever, which has the population of 10,000 or more. So this is the area which falls in municipality or any cantonment board, and it has the population of 10,000 or more. So population how much? 10,000, more than equal to 10,000. So if any area falls within the jurisdiction of municipality or cantonment board and it has population of more than equal to 10,000, then that area will be considered as urban area. Simple. Now in table there are few more points are given. First, shortest distance from area means from this area, from the jurisdiction of municipality. Suppose this is the jurisdiction of municipality or cantonment board, and in this area, in this jurisdiction, population is more than 10,000. So this is urban area, and from this area
shortest distance aerially up to 2 kilometers, up to 2 kilometers from all sides. Okay, 2 kilometers, 2 kilometers, 2 kilometers. So there is another area which doesn't fall within the jurisdiction of municipality, but it is just 2 kilometers away from jurisdiction of municipality, only 2 kilometers away, and has the population of more than 10,000 and up to 1 lakh. So this area should have the population of more than 10,000 and up to 1 lakh. Okay, so this area will also be called as urban area. Then next, if shortest distance from this area, see, this is the main urban area. Okay, this is the main urban area because it falls within the jurisdiction of municipality. Now first point was area which is just 2 kilometers away from this municipality area. So area which is just 2 kilometers far and having population of 10,000, more than 10,000 up to 1 lakh will also be considered as urban area. The next one, if the distance from area means this area is up to 6 kilometers. Total distance from here, this point till this point, is up to 6 kilometers. So this is the area which is 6 kilometers or up to 6 kilometers far from this area and has the population of more than 1 lakh and up to 10 lakhs. Okay, so this area will also be considered as urban area. And next one, shortest distance from the area is up to 8 kilometers. So this is your main area, shortest distance from area, so up to 8 kilometers, up to 8 kilometers. So this is the area which is far from municipality area by, or you can say by 8 kilometers approximately, or up to 8 kilometers, and it has the population of more than 10 lakhs. So this area which is up to 8 kilometers far from this main municipality area and has a population of more than 10 lakhs will also be considered as urban area. Okay, so this main area or area up to 2 kilometers or area up to 6 kilometers from this main area or area which is up to 8 kilometers from this main area will also be considered as urban area if population condition is also satisfied. See, in the municipality jurisdiction area, population condition is more than 10,000. It can be maximum any number, but minimum should be more than 10,000. Then if it is far from municipality area by 2 kilometers, then what is the population condition? More than 10,000 and up to 1 lakh. Then next one, more than 1 lakh up to 10 lakhs, and for next one, more than 10 lakhs. So this is the definition or meaning of urban area. So this is urban area full. Okay, so whatever is not in urban area, so this is what, rural area. So इस सर्कल के बाहर जो भी आप देख रहे हो एरिया, ये सब क्या है? रूरल एरिया. सो अब यहाँ कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी आप एग्रीकल्चर लैंड बाय करेंगे और उसको आप बाद में ट्रांसफ़र करोगे तो उस पर कैपिटल गेन चार्ज नहीं होगा. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया. So basically for understanding the rural area meaning, you have to learn the meaning of urban area. Okay,
So rural area means area which is not urban area. So these 2 points actually we need to learn to understand the movable personal asset and rural agriculture land in India. This I have drawn just to make you understand the things. No need to draw it. If you want, you can pause the video and draw it for your sake only. Otherwise, it is not that important. So this completes meaning of capital asset. Now next one is definition of transfer. This is the second condition for getting the capital gain. The capital asset must be transferred. So definition of transfer as per section 247. So any definition start with section 2, subsection is 47. So transfer, whatever transactions are included in the meaning of transfer, that we have to learn. So transfer includes following transactions, and there is a shortcut also. It is called as circuit. It's called as circuit. So transfer means circuit. शॉर्ट में याद रखना, ट्रांसफर मीन्स सर्किट. सो कैपिटल एसेट की मीनिंग में आपको याद रखना है मिसेस जीएस एक्सेप्शन, एंड ट्रांसफर में याद रखना है सर्किट. सो दीज आर द ट्रांजेक्शन ऑन विच कैपिटल गेन विल बी लेविड. एस फॉर सेल, as for sale of capital asset, and we all know what is the meaning of sale. Then E for exchange of capital asset. This is called barter system, giving one asset and getting another asset in return. Okay, that is called barter system, exchange of capital asset. Then relinquish, R1 for relinquishment of capital asset, R2 redemption or maturity of zero coupon bonds. इसका अभी मैं मीनिंग नहीं बता रहा हूँ बिकॉज इसके बाद हम लोग इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये पॉइंट सेल ऑफ कैपिटल एसेट, और इसके ऊपर हम लोग को एग्जांपल्स क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक्सचेंज वाला, फिर रिलिंक्विशमेंट, फिर रिडम्पशन एंड ऑल दैट. तो एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा, आपको थोड़ा समझेगा थोड़ा नहीं समझेगा. तो एक एक पॉइंट डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपको इतना याद रखना है, ट्रांसफ़र इंक्लूड्स सर्किट, एस फॉर सेल, ई फॉर एक्सचेंज, आर फॉर रिलिंक्विशमेंट, R2 फॉर रिडम्पशन, ई फॉर extinguishment of any right in capital asset, C1 compulsory acquisition of capital asset under any law, C2 conversion of capital asset into stock in trade, I1 insurance claim due to damage or destruction of capital asset, I2 immovable property to be taken or retained in part performance of the contract. Then T for any transaction whether by becoming member of or acquiring shares in cooperative society which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property. ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र इज गिवन अंडर सेक्शन 247 एंड व्हाट इज ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र मीन्स सर्किट, और इसको आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेना है वीडियो पॉज करके. सिंपली नोट्स में आपको स्पेस दिया हुआ है, आप क्या कर सकते हो, नोट्स के पेज को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, हाफ हाफ, और बाद में एक हाफ में पहले कंप्लीट करो, दूसरे हाफ में जो बचेगा वो पॉइंट्स आप लिख देना, क्योंकि एक ही साइड में लिखोगे तो शायद नहीं आएगा, या जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसा कर देना. ठीक है, तो इसको सिंपली कॉपी करो, इसको हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र में क्या रखना है, सेक्शन 247, ट्रांसफ़र मीन्स सर्किट. सो अभी आपको तो मालूम होगा कि ट्रांसफ़र में कैसे एसेट ट्रांसफ़र करते हैं, बाय वे ऑफ सेल. तो सेल तो सबको पता है, बट ये सारी चीज़ें भी ट्रांसफ़र के डेफिनेशन में आते हैं. इसकी सारे ट्रांजेक्शन्स भी अगर आप करोगे तो भी आपको कैपिटल गेन चार्ज होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशंस जो 2 थे उसका एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र. इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं, तो ये एक एक करके हम लोग बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी करो.
Now next point in your notes is types of capital gain. So there are two types of capital gain. First one is short-term capital gain, and next one is long-term capital gain. Okay, short-term and long-term capital gain. And why we are learning these types of capital gain? Reason behind this is rate of tax in capital gain, because in case of short-term capital gain there is a different rate of tax, and in case of long-term capital gain there is a different rate of tax. Okay, that's why we have to learn whether the capital gain is short-term or long-term. So in normal situation short-term capital gain arises if asset is transferred within 3 years from the date of its acquisition. सो नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी असेट आप बाय करते हो और बाय करने के डेट के बाद विदिन 3 इयर्स अगर आपने सेल कर दिया, 3 इयर्स के अंदर आपने सेल कर दिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इफ कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड within 3 years from the date of its acquisition. फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन. ठीक है, 3 इयर्स अगर कंप्लीट हो गए तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा. 3 इयर्स कंप्लीट नहीं होना चाहिए. आपने जो डेट पे बाय किया है उस डेट से काउंट करना है और 3 इयर्स कंप्लीट नहीं होने चाहिए. तो विदिन 3 इयर्स ही अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दिया तो उस पर जो गेन होगा उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म. एंड अगर 3 इयर्स हो गए या 3 इयर्स से ज़्यादा हो गए और उसके बाद आपने एसेट ट्रांसफ़र किया तो दैट कैपिटल गेन विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. So if capital asset is transferred on or after 3 years from the date of its acquisition, then it is called as long term capital gain. So the criteria is 3 years. Within 3 years, on or after 3 years. So 3 years कंप्लीट नहीं हुए और उसके पहले ही आपने एसेट आपका ट्रांसफ़र कर दिया, सो गेन होगा तो उसको हम लोग गेन को बोलेंगे शॉर्ट टर्म. और 3 इयर्स कंप्लीट हो गए, एग्जैक्ट 3 इयर्स कंप्लीट हुए या 3 इयर्स से ज़्यादा कंप्लीट हो गए, फिर आपने एसेट ट्रांसफ़र किया तो उस गेन को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. एंड वाई वी आर लर्निंग दिस, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ओके, सो अभी आप वीडियो पॉज करके आप ये नोट्स में ये डायग्राम इतना डिस्टिंग्विश करके आप बना लो फटाफट. ऑन द नेक्स्ट पेज, नोट नंबर 1, in case of following assets the capital gain shall be long term if such assets are transferred after 1 year. So note 1 और note 2, these two notes are exceptions. मीन्स यहाँ पे 3 years वाला कंडीशन नहीं है, 1 year वाला एंड 2 year वाला कंडीशन है. सो देर आर सम असेट्स विच फॉर विच कैपिटल गेन विल बी कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म इफ दे आर ट्रांसफर्ड इवन आफ्टर 1 year. ओके, सो विच आर दोज असेट्स? Number 1, shares and securities registered in the stock exchange. Example, debentures, bonds, government securities, etc. Registered in stock exchange means listed on the stock exchanges. Number 2, units of equity oriented funds. आगे स्लैश करके लिख देना UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. सो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स स्लैश UTI. तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या UTI के आपने अगर यूनिट्स बाय किए हैं
तो उसको अगर आप 1 ईयर के बाद ट्रांसफ़र करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म होगा, और 1 ईयर के पहले ट्रांसफ़र किया तो शॉर्ट टर्म होगा। ओके, सो ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है? इक्विटी ओरिएंटेड नाम ही क्या है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड। सो दिस इज़ द फंड वेयर मोस्ट of your investment is invested in the equity shares. Means if you are suppose paying 100 rupees to any mutual fund, and your mutual fund is investing more than 65% of your investment only in equity shares, then your fund will be called as equity oriented fund. Okay, so where more than 65% of your investment is invested in the equity shares only, then that fund is called as equity oriented fund. So ऐसे फंड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको मालूम है जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यूनिट्स मिलता है। तो वो यूनिट आप आगे जाके सेल करोगे तो 1 ईयर के बाद सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा कैपिटल गेन, और 1 ईयर के पहले ही सेल कर दिया तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इक्विटी ओरिएंटेड फंड अगर वो है तो ही उसके यूनिट के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे ये जो मैंने अभी कंडीशन बताई है मोर देन 65% इन इक्विटी शेयर, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपका फंड ऐसा है जहाँ पे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी या एफडी या फिक्स्ड इंटरेस्ट अर्निंग जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इक्विटी शेयर में आपने 30